Hi guys, I hope you all are doing well and I am Soham. Today we'll be starting with our chapter 2 of class 10th mathematics, that is polynomials. Earlier in the earlier in the videos we learned about our chapter 1, that is real numbers. I hope that chapter is clear and you have solved many questions, practiced the proofs, etc. So today we'll be starting with polynomials. Then we'll see what are polynomials, how do we represent them, then what are the zeros, what are the roots of equation, how do we how do we form an equation if we are given with the roots. So this is the chapter, very nice, small, simple chapter, just a little concept, and you can just practice a certain number of questions and you will get hands on it. So let's start with the chapter 2 of maths, that is polynomials. Firstly, I would like to put some light on the thing that what is a polynomial. A polynomial is a mathematical expression made up of variables, coefficients combined using addition, subtraction, multiplication, non-negative integer components. Simple भाषा में समझाता हूँ. See, okay. Let's say I have, let's say a person needs X amount of time to do some work. X amount of time to do some work, and another person needs 10 times the time of X person to do the same work. So this is how we'll represent the equation, and this is the total number of time. Let's say Y is total time required. X is the time required by person A to do the work, and person B requires 10 times the time of A. So that is why we have represented X plus 10x is equal to Y. Y is the total amount of time. So what we have used in it, polynomial is something that we use variable so that we can put any value in the variable to satisfy the equation, and then we can solve the equation as well. So I can put x, if I the x is something, I can say anything, because I can say that if I need 10 hours to work, then I'll say that x is equal to 10. If I put x is equal to 10, then the equation becomes 10 plus 10 into 10 is equal to y. Therefore, we get the value of y is equal to 10 plus 100 is equal to 110. So the total amount of time required would be 110 hours. So right. So basically, this may depends. No. Now let's say some other person is working. If he or she is efficient than me, then she'll take, let's say he'll take 6 hours of work to do. So if I'll say that x is equal to 6, then the equation becomes 6 plus 10 into 6 is equal to y. Therefore, the value of y becomes 66. So the value of y is changing as per the input is changing. Okay. I hope this is clear. Now, now thing comes. Okay. So we represent the polynomial using p of x. Let's say we have, I'm sorry. Huh. Using p of x, let's say we have 4x plus 2. Okay. ठीक है. You have learned in class 9 that the highest power of x in p of x is called the degree of polynomial. अभी इस इक्वेशन में highest power of x is 1, you may see. तो इसका डिग्री क्या हुआ? डिग्री is 1, right? If I would have written p of x is equal to x square plus 3x plus 6, then the degree would have become 2, because the highest power of x in the given equation is 2. यहाँ पे भी x है, but यहाँ पे उसकी power 1 है, and यहाँ पे उसकी power 2 है. We need the highest power. Okay, if I would have written p of x is equal to x cube plus 6x square plus 5x plus 9, then our degree would have become like 3, right? Because the highest power of the degree is 3, of x is 3. So this is how we represent a polynomial, that is using p of x, and further we have this also. Hmm. So next up,
we need to learn that what are these polynomials called as. अभी हमने तो देखा कि ओके डिग्री, हमने तो देखा कि अच्छा डिग्री 1 था तो पॉलिनोमियल ये था, डिग्री x का पावर 2 था तो वो डिग्री था। बट अपने को जानना है कि अगर ये ऐसा है, अगर इसको कहते क्या है। सो we'll say that if degree of a polynomial is 1, then the polynomial is called as linear polynomial. Clear? If the degree of polynomial is 2, then we call it as quadratic polynomial. Quadratic. If the degree of polynomial is 3, then we called it as cubic. For class 10, you are all concerned with only degree 3 polynomials. You did not go further beyond this. ठीक है? ओके, चलो अभी अभी हमने मान लिया कि ये ऐसा ऐसा इक्वेशन है। लेट्स से अपना इक्वेशन था 4x प्लस 2। ठीक है? अभी मैं इसकी कुछ वैल्यू नहीं दिया है, ये मुझे बस p ऑफ x दिया है। मैं अभी यहाँ पे जो जो x की वैल्यू पुट करूंगा मुझे वैसे वैसे आंसर मिलते रहेगा। मैंने मान लो x को 1 डाला तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। मान लो मैंने x को 2 डाला तो मुझे 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10। ऐसे ही मिलते जाएगा। अभी ये इनफिनिट वैल्यूज मिलते जाएंगे जितना जितना मैं x का वैल्यूज डालते जाऊंगा वैसा वैसा। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू in by which we get the expression is equal to 0. So basically if I have 4x plus 2 is equal to p of x, तो मुझे x की वैल्यू ऐसे डाले, मान लो वो वैल्यू k है, मुझे k डालने के बाद p of k 0 मिलना चाहिए, राइट। सो बेसिकली ऐसी एक वैल्यू जो कि मैंने x में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे p of x 0 मिल जाना चाहिए। So let's say let's see how to find it. So now we have 4x plus 2। अभी मुझे इसको जीरो करना है तो अपन इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। ठीक है, तो अभी तुमको पता है कि अगर 4x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है तो 4x इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि इक्वल टू के वहां जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी इधर x माइनस टू हो गया। अभी 4 इधर था मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, तो वहां जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। सो बेसिकली दिस x इज इक्वल टू माइनस टू इज द रूट और जीरो of the equation. This is called as a root or the zero of equation. Basically, it is a value. Let's say k is said. Let's say this is k. So k is said to be zero if p of k becomes zero. That is, if we put the value of k into x, then we will get p of x is equal to zero. Are you getting my point? Is that clear? We have seen this. You can see also here. You can also see here that 2x plus 3 is a linear polynomial. Then we have quadratic polynomial. Then we have cubic polynomial. The value of x at which we put k is denoted by p of k. ठीक है? अभी अभी ये था लीनियर। अभी लीनियर पॉलिनोमियल, अभी मान लो वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। मुझे इसका रूट जाना है, मुझे इसका जीरो जाना है। ओके, वन मोर थिंग, द मैग जितना x का पावर रहेगा, जितना x इज वेरिएबल। ओके, इस इक्वेशन में a तो तुम्हारा है, a और b है तुम्हारा कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है और तुम्हारा x है वेरिएबल। मतलब a और b की कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी और x हमारा वेरी करेगा। x को जो वैल्यू तुमको दी होगी या फिर जो तुम वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, दैट वुड बी x। ठीक है, अभी a x प्लस b, अभी मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है। जनरल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी को इक्वेट कर दूंगा जीरो के साथ, कर दिया जीरो के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मैं बी को उस साइड डाल दूंगा तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, therefore x is equal to minus b by a. So this is the general formula to find the value of, to find the root, to find the zero of a linear polynomial.
ठीक है, so this is the general formula to find. So you can take many examples. Let's say 3x minus 6 is equal is p of x. तो अभी मुझे अगर x चाहिए जिससे p of x 0 हो जाए, तो मैं कैसे डालूंगा? 3x minus 6 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6 इक्वल टू के बाहर जाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में था 3, तो यहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। ओके, अंडरस्टूड है? आई होप दिस इज क्लियर। अभी नाउ वी आल्सो नीड टू लर्न दैट हाउ इज दिस। अभी ये तो हमने निकाल लिया, ओके, बट इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होगा। यस, डेफिनेटली है। आई विल शो यू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। ओके, मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो ये y इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, अभी तुम लोग पॉइंट्स लोगे। अभी मान लो तुमने x लिया -2, x को तुम -2 डालोगे। अभी जब तुम -2 इसमें डालोगे, 2 इंटू -2 -4 +3, -4 +3 -1। ठीक है, तो तुमको जब x तुम -2 डालोगे तो तुमको पॉइंट मिलेगा, जब x तुम -2 डालोगे तुमको y -1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अभी तुम x को 2 डाल के देखो। 2 डाला, 2 इंटू 2 4 +3 7, तो जब तुम x को 2 डालोगे तो तुमको y 7 मिलेगा। Now, when you point these points on a graph, see if you are able to see, हाँ, so जब तुम ये ग्राफ पे प्लॉट करते हो, सो तुमको यहाँ पे मिला 2.2,7। ठीक है, एंड तुमको यहाँ पे मिला -2, -1। अभी when you join these points, no, you will get a straight line. So basically, a linear polynomial represents a straight line. ठीक है, और ये एंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय, मतलब उसको हम कहते हैं कि इन जनरल द लाइन इंटरसेक्ट्स एट, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट ये होगा -b/a, 0, क्योंकि वाई जीरो, अगर वाई 0 है तो वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट होगा ना। So this is how we say the linear polynomial ax plus b has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to x plus b intersects the x axis. ठीक है? ओके, नाउ सेकंड थिंग। अभी अभी लीनियर पॉलिनोमियल का तो इतना ही रोल था। ओके, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल तो सीख लिया। तो अभी क्या है? नेक्स्ट इज वी हैव quadratic and cubic polynomials graph. Okay, for class 10th, you are only concerned to plot linear polynomial के graphs. Plotting of graphs of quadratic or cubic polynomials is not meant to be done by the students, nor is to be evaluated. So no need to take the tension or the tension for the graphs of quadratic and cubic polynomial. Again, we have an example over here, that is अपने को equation दिया हुआ है y is equal to x square minus 3x minus 4. I'm again sorry for my handwriting, but I hope it is understandable. If we take if we put x is equal to -2, then we get y is equal to 6. -1, we get 0. When we take x is equal to 0, we get -4. When we put x is equal to 1, we get y is equal to -6. When we put x is equal to 2, we get -6. When we put x is equal to 3, we get -4. And when we put x is equal to 4, we get y is equal to 0. And when we put x is equal to 5, we get y is equal to 6. So now you can see we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. ठीक है, तो ये 8 points when you plot it on the graph. The reason behind taking these 8 points is to show the graph, because उसके बिना वो ग्राफ बहुत रफ आता था. Basically, for a quadratic polynomial, the graph is a parabola. तुमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन बनती है। लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये तुम्हारा ग्राफ है। बट इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू विल ऑलवेज गेट अ पैराबोला। पैराबोला इज समथिंग लाइक यू, और उल्टा यू, या ऐसा वाला यू, या ऐसा वाला यू, ऐसा भी यू हो सकता है। मोस्टली यू हैव अब ऐसा, ये फर्स्ट दो केसेस वाला यू होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज पैराबोला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला दैट इज उल्टा यू। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, राइट? तो ये जो डायरेक्शन है ना, वो ए की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ऐसा अपर पैराबोला है, ठीक है, तो ए तुम्हारा पॉजिटिव होगा, एंड इफ ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला है तो तुम्हारा ए नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस बिकॉज यू डू नॉट हैव दिस ओवर हियर। बट what are the rule of zeros in this? Basically, the x coordinates of a and a dash are the, for this case one, this is the zero. ठीक है, बेसिकली we have three types of zeros, मतलब we get three types of zeros, ठीक है? when we have this parabola, when the x-axis is cut at two distinct points, we get two distinct numbers that are the zeros of polynomial. The zeros of polynomials are for quadratic polynomial we get two zeros, क्योंकि x square है तो अपने को x की दो वैल्यूज मिलती है जिससे वो इक्वेशन जीरो होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में था, हमको सिर्फ एक वैल्यू मिलती थी जिससे x का वैल्यू जीरो होता था, बट हियर we get 2 points जिससे the quadratic polynomial becomes zero. So for this first case we have got two distinct points a and a dash, so that those are the zeros of the polynomial. Case 2, your parabola, that is the graph of the quadratic polynomial, touches the x-axis only at one point. Here you have equal and distinct roots. Sorry, you have equal and real roots. Basically, real roots मतलब ये real numbers है, ऐसा है, real and rational roots. यहाँ पे तुमको एक ही रूट मिलेगा, मान लो ये टू है, ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन के लिए, एक पॉलिनोमियल के लिए सेम नंबर ही रूट्स है, मतलब वो दोनों नंबर सेम ही है, ऐसा होता है, एंड फॉर दैट केस योर पैराबोला टचेस ओनली वन पॉइंट टू द at only one point on the x axis. ओके, एंड अगर मान लो if your parabola do not touches or intersects the x axis, you do not have zero in this case, so polynomial has no zero in this case. So basically we have seen three cases, that is, if the parabola intersects the x axis at 2 points, we have two zeros. If the parabola just touches the x axis at a point, we have one zero. And if it do not if it does not touch the x-axis, we have no zeros. Okay, I hope this much is clear for now. Next up, we also have the graph for cubic polynomial. You just need to put some values and you will get the expression here. X का वैल्यू कुछ लिया है, फिर उससे y का वैल्यू मिला है, ये पूरा तुम देख सकते हो, एंड उससे तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एंड इट डिपेंड्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स नॉट इन जनरल ऐसा कुछ, ठीक है? So yeah, this is what so far we have seen. We have seen that what are the degrees of polynomial, what do we call them? We have linear, quadratic, and cubic polynomial. We saw what are the zeros. We saw the zero for linear polynomial. Then we saw the general formula for the zero of linear polynomial. Now we will see the relationship of zeros for the quadratic polynomial. Okay, I'll just teach you, if you may know, but I'll just teach you कि कैसे हम रूट निकालते हैं by splitting the middle term का मेथड, ठीक है? एक काम करते हैं, give me a quadratic equation. Okay, let's say we have 2x square plus 3x, 2x square plus 3x minus 5. Okay, we have 2x square plus 3x minus 5 equal to 0. अभी तुमको ये जो मिडिल टर्म है 3x, इसको ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिससे तुम लोग आगे वो ये कर पाओ, सॉल्व कर पाओ. आई विल टेल यू हाउ. मुझे ये मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 3 आए, ठीक है? सम और डिफरेंस 3 आए, एंड उनका प्रोडक्ट 2 इंटू 5 है, मतलब ये जो ए एंड सी है तुम्हारा, ए एंड सी है, वो मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, एंड ऐसे दो नंबर जिसका ये सम और डिफरेंस 3 आएगा, ठीक है? तो आई होप 5 और 2 ही है जो नंबर्स है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इट.
2x² plus minus 2x plus 5x minus 5 equal to 0. I will see why I have written minus 2x and plus 5x. Okay. So just observe that minus 2x plus 5x gives us 3x, right? Samjha? And also minus 2 into 5 gives us minus 10, which is this product. So this is the rule to split the middle terms, right? So here we need to split the middle term. Okay. So this is how we split the middle term. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे विल फॉर दिस फर्स्ट टर्म विल टेक एक्स एंड टू इन कॉमन जो कुछ है कॉमन में ले लेते हैं 2x कॉमन है ओके तो बचा क्या यहाँ पे x बचा यहाँ पे 1 बचा x-1 ये ब्रैकेट वापस इधर लिख लेंगे x-1 अभी क्या बचा अपने को 5 अभी अपने को ये चाहिए मुझे ऐसा नंबर लिखना है जिससे मुझे 5x-5 मिले तो यहाँ पे मैं +5 लिख दूंगा क्योंकि व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट्स I get 5x minus 5, right? And here also 2x square minus 2x, right? So I'll just equate it with 0. Now I'll get 2x plus 5 एक ब्रैकेट में लिख लो ठीक है और ये x-1 एक ब्रैकेट में लिख लो इक्वल टू 0 कर दो दोनों को एक एक बारी 0 के साथ इक्वेट करो सो जैसे 2x plus 5 equal to 0 and x-1 equal to 0. So here you get x is equal to minus 5 by 2 and here you get x is equal to 1. So basically these are your roots of the quadratic polynomial. So this is, I hope this is clear that how do we find the roots of the quadratic polynomial. Now we need to see the relation between the roots of the equation. Let's say you have equation, I'm sorry. Let's say you have equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 ठीक है अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मान लो अपने रूट से अल्फा और बीटा दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा बेसिकली दीज आर ग्रीक टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट द zeros of the quadratic polynomial so what is the relation between them so I'll इसका प्रूफ वगैरह तुम स्कूल में कर लो या टेक्स्ट बुक में पढ़ लो दैट इज नॉट नीडेड ओवर हियर आई जस्ट write the general formula to know it here we have sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus b by a ठीक है and the product of zeros is equal to alpha beta is equal to c upon a सो मान लो तुमको अगर पूछा गया कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स बताओ सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ जीरोस बताओ या एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ तो व्हाट विल यू डू Uh, I know you can just find out the roots by using the splitting the middle term method and then writing it, then summing them or doing the product of them. But this is the general formula to find it: ax square plus bx plus c. That is, the sum would be x alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta is equal to c by a. So this is the general formula to find it. Okay. We can also see an example over here. Yes, it is given. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. I think we should solve this example. X square plus 7x plus 10. Okay. Let's say we have given x square plus 7x plus 10. ठीक है इसके रूट्स मान लो है अल्फा और बीटा ठीक है अभी फर्स्टली वी विल फाइंड कि आई विल फाइंड द रूट्स ओके नाउ वी फाइंड द रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अभी 7x है मुझे 7x को मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए मान लो ए और बी मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट जिसका सम या डिफरेंस इज 7 एंड उसका प्रोडक्ट इज ये 10 into 1 मतलब उसका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए राइट ए और सी को लेते हैं ना अपन यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है तो मुझे प्रोडक्ट में ए और सी मतलब अगर ये ए एक्स ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी एंड जिनका सम या डिफरेंस इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 तो आई थिंक वी हैव 5 and 2 ठीक है लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है। सो तुम्हारा जो मिडल तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये 7x है, मैंने 7x को सिर्फ स्प्लिट किया है दो टर्म्स में। मुझे प्रोडक्ट में 10 भी मिल रहा है एंड मुझे सम और उसका सम 7 भी मिल रहा है। ठीक है। तो अभी ये टर्म में से मैं x को कॉमन लूंगा, ये टर्म में से 5 और x दोनों को कॉमन लूंगा। पहले टर्म में से x कॉमन लूंगा तो x बचा क्या, x प्लस 2। ये ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख लूंगा सीधा सीधा। दिस मेथड वाज taught by my क्लास 9 टीचर, her name was स्नेहल मैम। आई इक्वेट इट विद जीरो। एंड अभी इधर क्या लिखूंगा, प्लस या माइनस? यहाँ पे मुझे चाहिए 5x+10। ऐसा क्या लिखूं कि मुझे 5x+10 मिल जाए? मैं +5 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5x, 5 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू 2 + 10। तो ये मुझे ये मिल गया एंड मुझे ये इतना पार्ट ये मिल गया। ठीक है। तो अभी मिल गया, पहला ब्रैकेट है x+2 ऐसा साइड में लिख लिया, इंटू x+5, ये बचे हुए टर्म्स लिख लेने के। ठीक है। So if we equate them with zero, so we'll individually equate them with zero. So x plus 2 equal to 0 and here x plus 5 equal to 0. So x is equal to -2 and here x is equal to -5. ठीक है। अभी we'll find sum and products। अभी मुझे मिल गया x and x की दो वैल्यूज मिल गई, तो अपना अल्फा तो हो गया -2 एंड बीटा हो गया -5। ठीक है। दो वैल्यूज मिल गए रूट्स के। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना था, वी नीड टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम फाइंड करते हैं, एक्स अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -5, दैट इज -7, राइट? देन वी हैव अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -5, दैट इज +10। ठीक है। नाउ वी न्यू दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज है। अपन ने देखा था -b फॉर दिस एग्जांपल, और b was 7। Okay, so for our example, a was 1, right? b was 7 and c was 10, right? So when we write alpha plus beta is equal to -b/a, तो -b क्या था, 7, b क्या था, 7 था। तो -b/1, that is -7, and c upon a, that is 10/1, that is again 10. So hence we have verified that -7 and -10 are the roots of the equation, and we have also verified the the relationship between sums and the zeros. Here also you can see that sum of 0 was -7 and the product of 0 was 10. I hope this is understood and we can move further. We can also move ahead. Also, I'd like to tell you that how do we write a quadratic equation. Let's say we'll write a equation as x square plus mm, alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. So basically this is the general formula to write an equation. Let's say मुझे दो रूट्स दिए, मुझे रूट्स दे दिए, अल्फा दिया था और बीटा दे दिया था। मुझे बोला है उससे इक्वेशन बनाओ। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मान लो इधर तुमको दिया है -3 एंड 2, ये तुम्हारे रूट्स है। तो अल्फा तुम्हारा -3 है, बीटा तुम्हारा 2 है। तो मुझे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सीधा सीधा आई राइट इट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। तो मेरा बन गया एक्स स्क्वायर, ये -3 प्लस 2 -x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी तुम अगर इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लोगे, देन यू विल गेट इट एज माइनस you will get it as -3 and 2. You can also write it as k into something because k is some constant. If it multiply it, that is also okay. If we do not, because अगर हम ये k को इस साइड भेज देंगे वो तो 0 ही बन जाएगा. So that is not a problem. Okay. Moving further, we have roots of cubic polynomial. Let's say we have ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0.
This is a general form to represent a cubic polynomial. इसके x की power is x की highest power is 3, so the degree of x is 3. So we get three roots: alpha, beta, or gamma. Gamma is again a Greek word to represent it. इसमें भी याद रखना है कि इसमें in this we need to see three things. That is the sum of the roots. That is alpha plus beta plus gamma is given by minus b by a. Then the product of the sum of the product of the roots, that is given as alpha beta plus gamma alpha is equal to c by a, and the product of the roots alpha beta gamma is given by minus d by a. So this is what the relationship between the zeros of the polynomial, zeros of the cubic polynomial, zeros and the coefficients of the cubic polynomial. So yeah, I guess we are done with the chapter. To summarize the chapter quickly, I'll just read it out. Polynomials of degree 1, 2, and 3 are called linear, quadratic, and cubic polynomials respectively. Then a quadratic polynomial in which x with a real coefficient is in the form of ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Because अगर a तुम्हारा 0 हो जाएगा तो तुम्हारा ये वैल्यू 0 हो जाएगा, and then obviously अगर वो 0 हो गया तो तुम्हारा ये linear polynomial बन जाएगा, because the highest degree, highest power of x would be 1 and not 2. Okay, then the zeros of polynomials are precisely the x coordinates of the points where the graph of y and intersects the x axis. So basically zeros of the polynomial are x coordinates of the graph of the points जहाँ पे वो graph intersect करता है जो कोई polynomial का graph बनाया होगा उसमें. Uh, Quadratic polynomial can have at most two zeros, and cubic polynomial can have at most three zeros. We have seen this. And we have seen the relationship between the roots and the coefficients of a quadratic polynomial. Then we have also seen the relationship between the cubic polynomial. I hope this chapter is understood by you. If not, just watch this video again. I hope it will be cleared. And also for reference, read the NCERT one, solve all the solved examples, exercise questions. Refer your class teacher's notes. And if you have any doubts, please put it in the comment section. I would definitely love to clarify them. Also, if you have any feedbacks, feel free to put it in the comment section. I will definitely incorporate. I will definitely incorporate those things and feedbacks into my teaching and improve myself. So yeah, we are done with chapter 2 of our class 10th maths, that is polynomials. I hope it is all clear. Just go through the NCERT ones, practice all the questions, practice all the solved examples, understand what all things we have done. Try to prove it using examples on your own. And if you have any doubts, feel free to reach out to me. I guess that is up for the section. I'm done. This is from my side. Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care. Thank you so much. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.